All my little friends, very good morning, very good rainy morning to all of you. Here I am Manjay Pramani from KVCRPF Mokama Ghat. Today in this morning we will discuss about the protective food. Last class we already discussed about the bodybuilding food and energy giving food. And I gave some words to you and some of you replied very nicely but some of you not replied. So I hope today in this class, after the class, I will give some work and I hope all of you replied me very soon. So let's start. Today in this class we will explain and we will discuss the topic protective food. What is the protective food? Protective, the word, from this word we can guess the idea. What is the idea regarding this? प्रोटेक्टिव दैट मीन्स जो खाना प्रोटेक्शन देता है हमारे बॉडी को, बहुत सारे डिजीज़ बीमारियों से बचाता है और इसमें सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं हमारे मिनरल्स और विटामिन्स। और जिस खाने में मिनरल्स और विटामिन्स ज़्यादा पाए जाते हैं उस खाना को हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव फूड। वी कैन कॉल प्रोटेक्टिव फूड, वी कैन से प्रोटेक्टिव फूड दोज टाइप ऑफ फूड्स दोज कंसिस्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. So here you can see some pictures and from this picture you can get the idea about it. Here you can see some vegetables, brinjal, bottle gourd, tomato, grapes, some fruits also such as grapes, banana, and all these fruits and vegetables you can say the protective food, because in it from it you can get the minerals and such type of vitamins. Those are very essential to protect our body from many diseases. बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो उस बीमारी से बचने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमको मिलता है इसी तरह के वेजिटेबल्स और कहाँ से, फ्रूट्स से. और दूध हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है. दूध एक ऐसा खाना है जिसमें हर तरह की चीज़ें प्रॉपर वे में, प्रॉपर रेशियो में मिल पाता है. जैसे वो दूध हमारे लिए एनर्जी गिविंग भी है, दूध हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग फूड भी है और दूध हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड भी है. सो आई सजेस्ट यू टू टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क ईच एंड एवरी डे. इफ पॉसिबल you can take it. Here you can see about in this box, milk is a good bodybuilding food. It is very good for growing children. It is useful for grown ups also, not only growing. You can say that that milk is all rounder food, because it is protective food, it is energy giving food and bodybuilding food also. But its importance in body growing and proper development of our bones and muscles, this is very essential for us. The main component that is very important for our bone, that is calcium. And the calcium is the main component of our bone and teeth. If you want to make your bone and teeth very strong, then you have to take a glass of milk every day. So calcium is very essential, and you can get the calcium from milk. So all these foods, among these foods, milk is very essential and very important. Milk is also a protective food, and all the vegetables and all the fruits, you can get minerals and vitamins from it, and those all fruits and vegetables are called as protective food. So I hope you know about the protective food, and protective food is very essential for us. So day-to-day life, in our food routine, such type of food items should be kept by us, and in our dinner, lunch and breakfast, all time food, vegetables and fruits is very essential. So हमको ध्यान में रखना है कि हमारे खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़रूर हो और मिल्क ज़रूर हो, जिससे हमको वो मिनरल्स और वो विटामिन्स मिलें, जिससे कि हमारे शरीर स्वस्थ रहें और तरह तरह की बीमारी से हम शरीर को बचा पाएँ. तो बच्चों, शायद आपको समझ में आया होगा कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होती है और मिल्क क्यों प्रोटेक्टिव फूड है. और आज मैं कुछ काम आपको इससे रिगार्डिंग आई विल गिव सम वर्क.
I will give you some work, and I hope you will reply me very soon. Thank you.